Assalamualaikum viewers and listeners. Welcome to a special show of AllRounder 10 because एक special player और we will debate कि उनकी कैप्टनसी स्पेशल रही या नहीं रही. You all can guess till now हम बाबर आजम के बारे में बात करने लगे हैं. How his era went as captain in all formats. Of course तीनों formats के कैप्टन रहे, 4 साल कैप्टन रहे and हम तीन लोग हैं. Myself, Ahmed, your host for today. I have been joined by Hussaina all the way from Karachi, and of course my twin brother Ali is in the building as well. So first of all, Ali, before we get into the show, क्या हाल चाल है? थैंक यू अहमद मैं बिल्कुल ठीक ठाक All right. And Hussaina, how about you? Exams के बाद किस तरह चाल कैसे जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जितना एक पीटीसी पीसीटी का फैन हो सकता है सलातों में बट Yeah. And Hussaina's birthday was like preceded by Pakistan exit from the World Cup और उसके बाद पीसीबी ने पूरा ड्रामा लगाया. So I don't know what to make of your birthday, Hussaina, but anyway, that was on lighter note. So yeah, viewers, please get involved in the chat और live chat में एक poll भी चल रहा है कि how would you rate Babar Azam era of captaincy from 0 to 3.5, 3.5 to 7 or 7 to 10. ये काम हम बिल्कुल एंड पे करेंगे but we will keep a check on a rating from your side. So without a further ado, I think so. It is fair enough that we give a little and but a proper tribute to his services. Nevertheless, he has given us fantastic memories. So let's start on a very positive note. And Hosanna has few words to say on Babar Azam as captain and as person. So over to you, Hosanna. okay, so when Babar Azam started a new dawn, a new we saw a united front. We saw a team that never loses hope. We saw unity. We saw the whole toxic masculinity and team stuff left behind. So there it was a new hope, the beginning of a new era. The Pakistan we knew today, the Pakistan team we know today is called as Babar's team, and I hope it still continues. There were some flaws, but there is not every person is perfect. But yeah, I mean, he was bigger than the whole sky. That's all I can say. Uh, all right, that was short and sweet. Okay, for me, Babar was a hope. Babar was an inspiration. He gave us dreams. He made us to dream big even for glories, all sort of glories. But for few reasons, as Hussain mentioned, his turn came to an end. But I think the sun will shine on him again as a batter, again as a captain as well, because that is what Pakistan cricket is all about. Massive, like one of the best captains in Pakistan history. We will go down into the stats, of course, but Hussain has touched on upon it. We have never been united. I have never gone through the era of Imran Khan or Wasim Akram as captain, but after Shahid Afridi, 2 years or so, we have never been this united as nation as captain. So yeah, proper kudos to him. Thank you, Baba, for that. So yeah, shout outs done, positive sides done on a tribute side. Now we will be a bit more rational, bit more critical, I would say. But again, starting off, Ali, coming towards you. बाबर आजम 4 साल कैप्टन रहे, तीनों फॉर्मेट के कैप्टन रहे. दैट वाज क्लैरिटी ऑन हिम. ऑफ कोर्स दैट टू वाज on the back of Sarfraz Ahmed being removed as ODI captain first, फिर अजहर अली को थोड़ा सा short stint दिया हमने, and then Babar Azam was of course given 3 format captaincy. So Ali, जे क्वेश्चन एंड पे आंसर करने के 3 बेस्ट परफॉर्मेंसेस क्या रही थ्रू आउट हिज कैप्टेंसी, बट
What were the positives you took away from his captaincy throughout, like from all formats? So yeah, over to you. yes अहमद पॉजिटिव आई थिंक हुसैन ने काफी सारे पॉइंट्स एलेबरेट सही तरीके से कर दिए हुए हैं आई थिंक बिगेस्ट फैक्टर जो पॉजिटिव फैक्टर है वो टीम यूनिटी थी ये वाली टीम यूनिटी पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखी गई अभी आप कह रहे थे कि मैंने इमरान खान और वसीम अकरम कह रहा नहीं था कि वो यूनाइटेड थे या नहीं थे वो वाला एरा और यूनिटी बिल्कुल एक 180 डिग्री का वो है मतलब they are literally antonyms of each other that era and unity is literally an antonym जिस तरह वो पड्डे वगैरह सब कुछ होता था that is part of the history लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर ये हो गया and I think he has not taken us into the dreamland लेकिन he has shown the path टू द ड्रीम लैंड और बहुत अच्छी फाउंडेशन सेट कर दी जो भी आगे इसका मतलब अब शाहीन आ चुका है तो उसके लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन सेट हो चुकी हुई है ये दूसरा फैक्टर हो गया और कमिंग ऑन टू परफॉर्मेंसेस आई एम अगेन नेगेटिव बाद में हम टच करेंगे लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट स्पेशली द T20 और T20 2021 breaking that Indian jinx has to be the top of cherry for Babar Azam's positive points. So these are the top three positive points for me in the Babar Azam era. All right, nice to know. Hosanna, तीन बेस्ट परफॉर्मेंसेस एंड पे बुक मार्क करके बताएगा बट let's have a bit more discussion, bit more like broadening the debate on positive sides of Babar Azam. Uh, he is, of course, after Miss Paulak, he is by stats the most successful टेस्ट कैप्टन कुछ टेस्ट कैप्टन आए बट उन्होंने 3-4 मैचेस की कैप्टनसी किया है he has been your best captain only on the basis of stats. We have seen players performing under him, but you have to say much more on that point. Players grooming over that. So, yeah, Husana, positives for Mudid explain kya apna point. Okay, so positive for me was beating the Australian Jinx, defeating Australia in ODI. It was at our home, but it was a bad record we had against us. And also in the test, he stepped up with the bat. 196 in Karachi test. That was the highlight for me. And basically, obviously, the semis and the finals of the T20 World Cup, respectfully, that those were the positives for me. And in the test, we will touch on the negatives later. But हाँ मेरे लिए टेस्ट का भी it's not such a bad record. If we see it on statistic on paper, it's not that bad of a record. I think second best after Misbah, as you said. Yeah, Yeah. that was a positive. Mm, yeah. Okay. Coming towards me, I think it is my time to put flowers to his name. ओके हमने वो लाइक जलीमीन पे कर दिया उसका एक फेमस कोट आपको याद होगा कि नवाज तो मेरा मैच विनर है राइट ये अलग बात है कि नवाज ने हमें काफी मैचेस हरवाए उसके बाद अभी वाला मैच ले लो वर्ल्ड कप वाला मैच ले लो पिछले साल वाला जिम्बाब्वे के खिलाफ वाला मैच ले लो बट फ्लिप साइड टू दैट इज कि उसने जो भी प्लेयर पिक किए pretty much with all of them he stuck with them ठीक है उन्हें प्रॉपर उसने चांस दिया है एक्सेप्शंस हर जगह होंगे ठीक है हर बंदे के कप्तानी में आएंगे बट उसने कहा कि आई वुड रादर डाई ऑन दिस हिल रादर देन कि मैं हर सीरीज के बाद प्लेयर चेंज कर रहा हूँ सेकेंडली परफॉर्मेंसेस पे चलो कुछ टच डाउन कर लेते हैं दैट इज द आई मीन इंडिविजुअली हाँ जो सेकंड बिगेस्ट पॉजिटिव है बाबर की कैप्टनसी का वो you have to rate him as a batter. I was touching down on the stats. His average never went down under 14 hour formats as a captain as well. So that is a major positive takeaway. ठीक है अभी हम उसके अप्रोच पे बात करेंगे नेगेटिव्स में आएंगे बट दैट इटसेल्फ इज अ सॉलिड फाउंडेशन आपकी टीम को वो फाउंडेशन हर फॉर्मेट में ला के दे रहा है ठीक है और लाइक बिग मैचेस में भी परफॉर्मेंस रही है बिग टूर्नामेंट्स में कंसिस्टेंटली इतना परफॉर्म नहीं किया लेकिन बिग टीम्स के खिलाफ उसने परफॉर्म आउट किया हुआ सो दैट इज अगेन अ मेजर पॉजिटिव टेक अवे फ्रॉम मी के
कैप्टनसी का बटन उसकी बैटिंग पे नहीं आया इतना, कुछ आया है वो हम नेगेटिव्स में डिस्कस करेंगे। लास्टली कुछ हाइलाइट्स जो परफॉर्मेंसेस ऑफ कोर्स आई हैड वन ऑफ देम सेम जो हमने टेस्ट मैच से आउट किया था, दैट 196, और लास्ट ईयर का सेमीफाइनल मुझे नहीं भूलेगा 2022, दैट सेमीफाइनल, दोस इमोशंस एट सिडनी लिटरली सोल्ड मी ड्रीम्स। मुझे लगा था कि लाइक वी नाउ वी आर अनस्टॉपेबल फोर्स, जय वर्ल्ड कप सिर्फ हमारा है। ऑलवेज इंग्लैंड बेटर एंड बीट अस a few days after that। वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, ऑल बी इट अपोजिशन इतनी अच्छी नहीं रही थी। द बेस्ट वन हैज बीन ऑलरेडी पिक्ड आउट बाय होसाना, जो हमने चेस की थी ऑस्ट्रेलिया का 350 अराउंड अबाउट, दैट इज। एंड इस वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका की चेस दैट रियली इंस्पायर्ड मी कि यार ओके वी आर हियर टू डू समथिंग। सो या these are positives from my side. Now let's switch the mood. Of course, viewers, you can Like, get I involved in wanted the to chat. add some more things. Like, can Sure, I? Like, I wanted to add more things. So sure thing, sure thing. there were also more positives from. We saw backing of like new age of batters, right? Like, पहले कभी इतने coming of age batters here. We have Abdullah, we have Saim, we have Haris. Like they are influenced by power. Peshawar Zalmi, he's backing Haris, he's backing Saim, he's backing Hasibullah, who's gone on and he scored a list 100 today as well. So I think that there is a new age of batting coming, and I think this is of influence of Babar Azam because he's the biggest batsman of the country, and that that could never PCB could never take away that from him. So I would say, okay, yeah, new age of batting, it's coming. Uh, 'Cause- all right. I think so. इधर अली और मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, आप अली के रिएक्शन से जज आउट कर सकते हैं। ओके, इसी से सेगवे कर लेते हैं। सो अली, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी पॉइंट से पिकअप कर लो और अपने नेगेटिव्स ऐड कर देना जो बाबर की, लाइक ओवरऑल भी मेंशन करो कि इंस्टेंसेस आपको याद पड़ रहे हैं विच यू वाना स्पेसिफिकली हाईलाइट्स हो जा, और स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ लेट हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा है जो उसकी डाउनफॉल के मेजर रीजन बनी। सो या ओवर टू यू। Yes, Ahmed, again, just establishing a basic point, he is not a natural gifted leader. You can say he has not got that aura which naturally leaders do have in themselves. ओह, आ So, रहा है। no, he doesn't have that leadership aura. He does have that batting aura. लेकिन उसके पास वो leadership वाला aura नहीं. Again, थोड़े बहुत लोहरी typical linguistic problems भी हैं उसके, तो वो भी थोड़े उसको hinder करते. But not going into that detail much. वो हमारा कौमी मसला है खैर. So again, coming on to the negatives, there are lots and lots of them. I can start listing them, and it can go on and go on. So again, I think जो उसने पूरे 4 साल चलाए ना, they are far too much comfortable with the lesser achievements you can call, उनसे बहुत ही ज्यादा मुतासिर होके उसी पे मतलब इत्तेफाक कर लेते हैं कि यही हमारा लेवल है। हालांकि जो बाबर आजम के पास रिसोर्सेज थी, ये आई थिंक 2011 के बाद 2011 की ओडीआई की जो टीम हमारी बनी थी उससे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उससे भी डबल इसके पास रिसोर्सेज है, लेकिन दे आर फार टू कंप्लेसेंट और एक दूसरे का अकाउंटेबल भी नहीं करते। अगेन वो होलसेमनेस, टू मच ऑफ होलसेमनेस। ठीक है, ओके, ये हमने सेमीफाइनल में पहुंच गया, मतलब यार आपने सेमीफाइनल में नहीं पहुंचना, यू हैव टू एडवांस फ्रॉम दैट मेंटालिटी। सेमीफाइनल में पहुंच के बड़ा इंकलाब आ गया, ये हो गया, वो हो गया। नो, नॉट दैट। यू आर नॉट हियर टू पार्टिसिपेट, यू आर there to win it. So I think mentality part was the biggest lagging factor in whole of that leadership group. That includes Shadab, that includes Shaheen Afridi, that includes Rizwan. They didn't show much of that कि यार इससे हमने नेक्स्ट लेवल पे जाना. They didn't show that. Babar Azam himself, in particularly in shorter formats, उसकी वो IQ नहीं है to take those brave decisions, take the timely decision, take the attacking options at the right moments. He has passed us so many matches, 2021 semi-final, Asia Cup,
अगेन बॉटलिंग jeans, too much of bottling jeans, और सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया, आई कैन लिस्ट मैनी ऑफ टाइम। और आई थिंक जो उसके पास रिसोर्सेस, अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, 2021 सेमीफाइनल, यू हैव नेल्ड द फर्स्ट पावर प्ले, लेकिन जब आपका पहला पावर प्ले खत्म होता है, यू लेट लूज, यू इजिली लेट द गेम लूज। आप जंपा को आराम से खेले, आप उनके स्टाइनिस को भी बड़े आराम से खेले। जब आपको मोमेंट्स मिलते हैं, यू डोंट नेल देम, यू आर जस्ट टू मच कंफर्टेबल इन योर ओन शेल। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद आई थिंक हुसैन ने मेंशन किया कि न्यू जनरेशन ऑफ बैटर्स कमिंग आउट, साइम, अयूब एंड हारिस, आई डोंट थिंक दे आर influenced by Babar. If they were influenced by Babar, they wouldn't be playing those charts. और मेरा बाबर से बड़ा ये इख्तिलाफ भी रहा है, even in this World Cup selection, I would really have included Mohammad Haris। 2022 में भी बाय चांस मोहम्मद हारिस आ गया था, और मेरे नहीं ख्याल बाबर इज दैट, बाबर डजंट गिव दैट मच ऑफ फ्रीडम टू particularly the youngsters। अगेन वही उसकी मेंटेलिटी रही कि टेक इट डीप, शुरू में आराम से खेलो विकेट बचा के। दिस काइंड ऑफ फिलॉसफी will never ever work out, especially in knockouts where you have to, मतलब knockouts में पहले पहले आप ऐसा पंच मारो कि जो दूसरी टीम है, वो अगर T20 का मैच है, पहले अगर आपके 6 ओवर बहुत अच्छे चले गए ना, तो वो 34 ओवर कैचअप करते रहे। इस तरह वनडे में भी जिस तरह इंडिया कर रही है और ऑस्ट्रेलिया करती है, पहले 10 ओवर ऐसे खेलो कि बाकी जो दूसरी टीम है वो 90 ओवर्स कैचअप करती रहे। और ये बात नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज हमारे पास थे। हमारे पास मोहम्मद हारिस था, वी हैड द आर्ग्यूबली द सेकंड और थर्ड बेस्ट bowling lineup, but we didn't go for the kill in the right moments. Or I can go and go on, but let's have your views, and particularly the Osana's view. I will add on Yeah, more later. yeah, Ali won't stop here, but Husana, आपका बारी है. Uh, where do you think he went wrong with his selection, with his Okay. tactics? Yeah, please, Omega. Okay. So textbook captaincy, no dynamic changes. Like on-field decisions हमने बाबर से बहुत कम देखे. We can't see अगर पेसर ऊपर से 4 विकेट्स ले गए तो he wouldn't, वो पेसर को हटा देगा, he will bring on spin, जो हमारा वैसे ही बहुत weak है. He will not go for the kill. Like Ali Yes. said that he will not go for the kill. I hated that. Like इतनी frustration feel होती थी, स्क्रीन पर बैठ के चलाने का दिल चाहता था कि ये स्पिन क्यों आ गई, अभी पेसर रिवर्स स्विंग हो रही है, अफगानिस्तान वाला मैच से मिला, रिवर्स स्विंग हो गई है, उसने उसामा मीर को लगा दिया है Usama Mir, वो. yes. So that was stuff. He backed Nawaz. मैच में नवाज has never handled pressure. वो बैटिंग में कभी उसको खिला दो, सलमान अली आगा handles pressure so much better. नवाज ने आज तक pressure handle नहीं किया, उसको back करता गया. He put his faith in wrong players sometimes. I don't know why he had so much faith in नवाज. He gave the last over. वो कितने crucial last overs उसने नवाज को दिए, क्योंकि वो कैलकुलेशन की वजह से पूरी गड़बड़ हो गई थी. Yes. एंड द थिंग इज कि एंड आल्सो द फैक्ट कि सही है, वो गेम को बहुत डीप ले जाने के चक्कर में अपना स्ट्राइक ग्रुप इंप्रूव नहीं करता. एंकर T20 में of course एंकर mentality, I think he's afraid to lose. I don't know what he Yes. goes through, but yes, the anchor mentality, taking the game too deep. Like he has the capability. He doesn't have like any known weaknesses except giving his wicket to the mid on spin. But he has this, like he has the capability to play big shots. I don't know what he's afraid of. Like I don't know what's holding him back. Like we have seen Babar go. Like we have seen the 2019's Babar. We have seen uh, PSL, this PSL, okay, पिछला PSL क्या है? We have seen him playing freely, free shots. I don't know why he doesn't replicate that form into Pakistan's T20, and he could have improved in ODI. It was a stinker from him. This ODI, like this ODI World Cup was a stinker. But also the fact that we don't have enough ODIs, हमारी bench strength, because ये 19 ODIs खेले हमने पूरे 4 साल में. I think 19. तो Yeah, spinners Yes. perform कर रहे थे. Nawaz and Shadab were performing whole year. So he backed them. गलती हो गई, बट वो श्रीलंकन सॉरी वो एशिया कप में उसने देख लिया था कि उसके नई स्पिनर्स अच्छा कर रहे. ही कुड हैव put Abrar in the main team. I don't know why he didn't do that. कि वो
रिजर्व में क्यों रखा है, नहीं कर रहा तो लाइक I don't know, but yes, that's my view on it. And we also lost 3-0 to जब England at home. That was the biggest disappointment कि अबरार जाहिद महमूद को आपने फर्स्ट टेस्ट खिलवा दिया, 300 रन पड़े उसको, and also the fact that अबरार आपके पास था, you didn't play him the first match क्योंकि वो जाहिद महमूद, the coach said, Shaklan Musab said कि वो जाहिद महमूद was waiting for his turn. How do you justify that कि आप waiting for the turn तो आप पहले खिलवा दोगे, अबरार आपका better spinner है. That was stuff of like, but yeah, we saw a better captain in the Sri Lankan test, I'm not gonna lie, but Sri Lanka was not a great team, we could say that. But let's see अब शान हाँ, okay. You have to digest those points out. I was digesting from both of you. And Jabir, please get involved in the poll as well, as I mentioned it out. Ratings का poll चल रहा है. Your ratings for Babar era as captain. From 0 to 3.5, it stands as 20. It means one vote. Then 3.5 to 7, 60% vote. And 7 to 10 भी एक vote है. So yeah, please keep them up. ओके, नाउ माय टर्न. काफी सारे पॉइंट्स आपने एस्टेब्लिश कर दिए. आई वांट टू पुट एज अ बेसलाइन, मैंने एक चीज में मिस कर गया था. दैट वाज जो मैंने एक परफॉर्मेंस हाईलाइट किए थे, दैट वाज आवर होम सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बिल्कुल शुरू में, जहां पे हसन अली ने रन थ्रू किया था साउथ अफ्रीका को. वी वन दैट सीरीज राइट एट होम. दैट टू मैं इसको कनेक्ट करूंगा जो हमने पिचेस सब बनाए थे. कराची में मैचेस हुए थे, दोनों वैसे कराची में मैचेस हुए थे, बट पिचेस वर गिविंग सपोर्ट बोथ स्पिन और बैटिंग के लिए भी लाइवली थे. आउटफील्ड हमेशा कराची की अच्छी होती है, बट पिचेस वर प्रिपेयर्ड रियली गुड. अभी जो हमने पूरा साल ड्राई किया, अब मैं नेगेटिव की तरफ टच डाउन करना चाह रहा हूँ. ऑफ कोर्स सारा ब्लेम बाबर के ऊपर नहीं जाता, बट मेजर ब्लेम फिर भी बाबर के ऊपर जाएगा कि आपने पूरा साल जाया किया है फ्लैट ट्रैक्स बना के. ठीक है, पीएसएल में भी, इवन पीएसएल में भी आप एडवोकेट कर सकते हो बाबर हैज दैट सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी. आई वुड से आरा नहीं भी हो, ही हैज सम आरा, बट अली का वर्ड अगर मैं ज्यादा अब्यूज नहीं करूं, ही हैज सम सॉर्ट ऑफ आरा, ही हैज सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी. आपने पीएसएल भी जाया करते हो जो पिंडी की पिचेस बना के पिंडी की पिचेस बना के खेल जाते हो, रन और इटीसी. और स्पेशली इंग्लैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, और व्हाट हैव यू डन. इवन आपने फ्लैट पिचेस भी बना ली. डिफेंसिव तो खैर आप पहले हो गए, इंग्लैंड से आप व्हाइट वॉश हो गए राइट. एक ही दिन में 500 स्कोर खाए. आई मीन सीरियसली ब्रो, सीरियसली. और ओके, फिर आप ये मेरा पहला एक नेगेटिव था कि दैट पिक योर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द क्रिकेट, वे ऑफ अप्रोचिंग द गेम. ठीक है, बड़ी टीमें आए, आप जो इमीडिएटली गो फॉर द डिफेंसिव, वही रिसोर्सेज आपके पास चाह रहे हैं. देन एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मेरे ध्यान में भी था, हुसैन ने मेंशन आउट कर दिया, जाहिद महमूद वाला या उस्मान कादिर वाला. ठीक है, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि इंडिया में रिस्ट स्पिनर्स या मिस्ट्री स्पिनर्स आपको जरूरत पड़ेंगे. ठीक है, उस्मान कादिर को आखिरी दफा हमने चांस दिया था पिछले साल, होम पे चांस दिया था, पिछले वर्ल्ड कप से पहले, T20 वर्ल्ड कप. तब उसे हम T20 में डालने लगे थे, बट वी नेवर वर्क मोर ऑन हिम. ठीक है, इब्रार अहमद ने 38 विकेट्स हो गए टेस्ट में. ठीक है, होम कंडीशन पे परफॉर्म किया, व्हाटएवर, या श्रीलंका में जा, बट कीप पुशिंग हिम, नॉट कीप पुशिंग हिम. शदाब, आई मीन यस, प्लेयर पे अगला सेगमेंट हम रखेंगे कि अदर फैक्टर्स क्या बने अपार्ट फ्रॉम बाबर, जो बाबर के डाउनफॉल क्या बने. एंड देन जो बिगेस्ट मोमेंट पे आके हम चोक आउट करते हैं, आई मीन टैक्टिक्स आर माय बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन विथ हिम. टैक्टिक्स एंड अगेन जो आप ऊपर से अप्रोच सेट आउट कर देते हो. अच्छा, पिछले 2 टूर्नामेंट्स आई वुड बी फेयर टू पुट आउट, पिछले 2 टूर्नामेंट्स में ना हम वो वी टू इजीली टैग के कुदरत के निजाम के साथ हम जरा सकलैन मुश्ताक और कोचेस को ना वो क्रिटिसाइज कर देते थे कि यार ये लोग होल्ड आउट कर रहे हैं. बट अब 4 मैनेजमेंट के अंदर आई थिंक सो बाबर खेल चुका है. दैट अगेन इज अ पार्ट वे के सारा ब्लेम बाबर का नहीं है, बट अगेन उन सब मैनेजमेंट के अंदर हमारी अप्रोच मोर और लेस सेम रही है. तो
For that, a common factor एक ही बना है, and that is Babar Azam. So now you have to point that out. और even अभी आप I won't go much into the detail, but अभी आप अगर वो देखो जो हमने मैच जीता फकर जमान ने जितवाया न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनका पोस्ट मैच आपस में उनके इंटरेक्शन देखो. बाबर इज अगेन कंटिन्यूअसली सेइंग यार एक छक्का Take लग a गया tweet, डैम जो take a tweet. नहीं ब्रो गो फॉर द किल गो फॉर द किल 400 चेस करने. सो दैट इज I mean that really speaks of him कि यार how he wants to approach the cricket. और अली और मेरी आपस में भी बात होती रहती है यार हर वर्ल्ड कप ना हम पिछले 4 साल पहले वाले क्रिकेट खेल होते हैं. तब मिसबा के दौर में भी हमारी यही फ्रस्ट्रेशन होती थी, बट मिसबा के पास लिवरेज थोड़ा सा ये था. अवर रिसोर्सेज आर लाइक आई मीन बंदा नाम भी नहीं ले सकता. अवर रिसोर्सेज आर डाउन टू लाइक बेयर मिनिमम. आप पिछले 2 साल से मालिक को कहता रहे यार हमारे जो पीक प्लेयर्स मिले हैं यूनिटी इसने बहुत अच्छी बना दी, नो डाउट अबाउट दैट, बट वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस पीक ईयर्स. अब मेरे लिहाज से आई वांट टू कंक्लूड दिस सेगमेंट आउट. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट व्हाट इफ एरा एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन फॉर मी बिकॉज we could have easily won 2 or 3 titles. So अभी कंक्लूड द नेगेटिव सेक्शन आउट, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ जाते जैसे मुझे आपने बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए, मैंने वो सोचे हुए थे. अगेन आपने बेंच स्ट्रेंथ आपने टेस्ट ही नहीं किया. आप अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, आप जिम्बाब्वे की सी साइड के खिलाफ खेल रहे हैं. रिजवान लाजमी खेलेगा, शाहीन खेलेगा, आप पट्टे बना के आप उन्हें अनफिट भी कराओगे, इंजरी भी कराओगे, लेकिन खेलना उन्होंने है. और एंड टाइम पे आपको जब आपको रिवर्सिंग चाहिए थी तो फिर आपका मोहम्मद वसीम जूनियर काम आया, जो आपने बिल्कुल टेस्ट आउट नहीं किया था. इस तरह जंगल आर्ट को आपने बिल्कुल मौका नहीं दिया. आई थिंक जंगल आर्ट वुड बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद बाबर आजम. खास तौर पे मोहम्मद हारिस हो गया, सीपुल हो गया, दे विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिम. आप उन्हें साथ लेके चलते रहे, लेकिन यू डिडंट इवन टेस्ट देम वर्सेस सम रैंडम साइड्स ऑफ अफगानिस्तान. सो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही. और टेक्टिकली अगेन आई थिंक ही इज टेक्टिकली अवर वर्स्ट एवर कैप्टन आई हैव सीन हैं. इन ओह, माय लाइफ टाइम. that is a बहुत big ब्लंडर्स statement. मारे इतने एक ही मैच में. आई मीन 10-12 ब्लंडर्स हमारे लेमन टर्म्स, मतलब हम नॉर्मल फैंस हैं, वी कैन स्पॉट देम, चीख रहे होते हैं, लेकिन ही इज लाइक जिस तरह वो रट्टा मार के आते हैं ड्रेसिंग रूम से. पहले 14 ओवर फास्ट बॉलर T20 में, पहले 14 ओवर फास्ट, पहले 6 फास्ट, फिर 6, फिर 8 स्पिनर्स, फिर 6 फास्ट बॉलर, रट्टा मार के कोई चेंजिंग नहीं करनी. और अगेन मैचेस में भी इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया. There was team to help him, but again, I don't think so. He is much into the matches and all kind of data stuff. अभी उसे टाइम लगेगा. Maybe he recognizes the importance of data in the modern game, but I don't think so. So tactically inept or not aggressive, not taking aggressive options, bench resources आपने. और I think authority भी सबके I think Afridi didn't have that much authority. Afridi के पास resources थोड़े टाइम के लिए आए थे, and he performed hell of a performance in 2011 World Cup. So that was a hallmark of how captain should lead side. So इसके पास resources भी थे, but it is not in what if era. It is highly I think disgusting era, to be honest. आपके पास resources हैं, आपके पास सब कुछ है. You had 2 Asia Cups, 1 World Cup of T20 and 1 World Cup of 50 ODIs in your home conditions, and you literally not even voted them but lost it badly. So I think it is not going to be remembered as what if era. It is going to be a wasteful era. Oh wow! Now that is a big bold statement. I get from where you are coming from, Ali, but I don't agree with it. Okay, I get कि आपका point क्या रहा, आप किस baseline से आ रहे हैं. The thing I want to build is कि आप जो एक बात कह रहे थे ना, मैं बाबर आजम कह रहा को अगर मजीद डीप इन करना चाहूँ ना, मैं इस लिहाज से देखता हूँ कि यार he hit his ceilings. Ali, just to give an analogy, जैसे मैं एफएससी के हवाले से चलता हूँ, I would keep it very short. कि उनका जो बिजनेस मॉडल था, it hit some certain ceiling, but that ceiling should not be taken away from him. वो सीलिंग हमारी कभी भी नहीं रही थी.
शाहिद अफरीदी इज एन लाइक एक्सेप्शनल एनालॉजी हमारे वास्ट टाइम में, ठीक है। वो बिल्ट इन करना, वो मेंटालिटी लाना इटसेल्फ इज अ ह्यूज ह्यूज टेस्टामेंट। ओके, आपको लगता होगा रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं, बट उन्हीं रिसोर्सेज के इतने अच्छे इतने साथ लेके चलना, ही ही रियली वेंट फॉर इट। जो मसला वही रहेगा ना, व्हाट इफ वाला जो पॉइंट मेरा है ना, व्हाट इफ वो आप बस किल नहीं किया आपने उन मोमेंट को। एशिया कप लाइक 55 for 4 इन लाइक पिछले साल वाला एशिया कप, एंड यू देन गो डिफेंसिव लाइक फिर वो चेज में उनके आपको पास। पहली बार पे उसने चेज में जब वो हम एशिया कप फाइनल में चेज कर रहे थे, आपको पहली बार पे उसने वाइड बाई चौका करा दिया, और आपने फिर पूरा ओवर मेडिन खेला। आप डिडंट इवन यूर आप क्रीज से बाहर नहीं निकले, आप बिल्कुल स्टैटिक होके खड़े हो गए। सो आई थिंक आई कांट रियली डिफेंड बाबर आजम कैप्टेंसी और हाँ, इवन एज टीचर इन दिस एरा एट ऑल। हाँ, और दूसरा वही बात के स्पेशल जब आप इसमें टेस्ट के एक्यूमुलेट करते हैं ना, WTC फाइनल, यस, आई नो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ड्रीम करना एक तरह से लाइक इजी भी होता है, मुश्किल भी होता है। लाइक वन एडिट्स वन कंपटीशन वुड मेक यू कि यार हाँ, बट देयर वाज रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी कि हम WTC फाइनल पहुंच सकते थे, बट वी कंप्लीटली चोक्ड आवर होम सीजन। तो जब आप स्पेशली ये ऐड करते तो यस, आई कैन एक्सेप्ट कि व्हाट इफ एरा नहीं कह सकते, बट स्टिल एक दो मोमेंट्स इधर उधर वी कुड हैव वन द टाइटल। सो आई थिंक सो इस पॉइंट पे इस सेगमेंट को एंड करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ ब्रॉडर डिस्कशन, फिर हम रेटिंग देंगे ओवरऑल। ब्रॉडर डिस्कशन इज कि यार, इट इज फेयर टू पुट आउट, इट वाजंट ओनली डाउन टू बाबर, ही हैज बीन सैड। आपके क्या चीज हो सकता है कि this was a perfect moment for him to be like relieved from the duties or whatever, but स्पेशली अगर इसी वर्ल्ड कप को देख लें कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो इस पे भी बात कर रहे थे। दैट वाज नॉट ओनली डाउन टू बाबर। अगेन मेरा पॉइंट ये रहेगा कि लोग अभी आगे से आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड कर रहे थे कि यार उसके पास ऑप्शन ऐसे थे, भाई ये ऑप्शन बाबर ने पिक किए हैं, ठीक है, कुछ भी करने के साथ कर, सो अगेन ब्लेम वुड गो टू हिम, ठीक है। बट पीसीबी ने जो मैच क्रिएट किया है, अली अभी आपने मेंशन आउट किया था कि यार हमारे प्लेयर हर जगह जाके खेल होते हैं। आई 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 हेट दिस, ठीक है। शाहीन को नहीं खेलना चाहिए अफगानिस्तान के खिलाफ, या हारिस को नहीं खेलना चाहिए, बट हमें, क्योंकि मैं अगले सेगमेंट की तरफ जा चुके हैं, दैट इज पीसीबी ने हमारे समर सीजन में इन प्लेयर्स को पे नहीं किया हुआ था, राइट। दूसरा, और वो कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टॉलमेंट पे चला था, अब दोबारा वो कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टॉलमेंट, वो लाइक बेटिंग का जो इशू चल रहा है, फॉर दैट वेरी पर्पज एक बात जो होगी। दूसरा ये कि पीसीबी का ये ज्यादा रोल है कि उन्होंने सिर्फ 19 ओडीआईज रखे। हमारे जो मेन प्लेयर था शाहीन, पिछला पूरा साल इंजर्ड रहा था, ठीक है। वे उन्होंने भी तो कुछ गेम टाइम लेना ना। तो अगेन मैं अभी अब बाबर पे नहीं डिस्कस करते, हम जरा ये सेगमेंट करने लगे कि और फैक्टर्स ने भी पार्ट प्ले किया है। एक फैक्टर बन रहा है लाइक फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, मैं नहीं चाहूंगा कि हम उसमें जाए कि यार प्लेयर ग्रुपिंग, आई डोंट बिलीव इन इट, ना ही कोई ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। वी डोंट, हम ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठे कि हम बता सके क्या है नहीं, बट आई वांट टू कंप्लीटली रूल इट आउट। पीसीबी हैज अ लॉट एंड लॉट टू like lot of blames to share, और again even उसकी ending भी देख लो, so pathetic, so like in the middle of World Cup you put him under the bus, like you completely disown him, one of your best brand, I would say, like biggest brand in the current generation. So Susan, coming towards you, other factors जिन्होंने बाबर आजम के डाउनफॉल apart from himself वो हम डिस्कस कर। Okay, so Ramiz Raja, coming to Ramiz Raja, he ruined the England test by pitches. Like कैसी pitches लगा दी, यस, you nullified the whole bowling attack जो वैसे ही काम नहीं कर रही थी। इतने कौन था हमारा पेसर, हम मीर हमजा एंड मोहम्मद अली, यू nullified नए बॉलर्स, उन लोग का करियर भी खराब किया, फट्टा विकेट्स बना के, एंड you ruined it for them, I would say. And then of course नजम सेठी आया, मिकी आर्थर को जबरदस्ती आके कोच बनवाया। लाइक आई वुड से शक्लेन मुश्ताक वाज अ बेटर कोच एट दिस पॉइंट। ये जो शिट हाउसरी हुई है पूरी, आई वुड से लाइक इतनी डिस्टर्बेंस पहली, बट obviously that was a factors change in coaching. Shane
कैसे बॉलिंग कोच उमर गुल से मॉर्निंग मॉर्कल, हाँ, we had हाँ. so many changes in 1 year over the time. And of course, or kya tha, Zakar Ashraf and the central contracts. I think they were against Babar Azam because he was reading the central contracts. Babar was reading the whole, if you could call it a union. There wasn't a union, but he was reading all the players to get a better pay जी. from themselves. So yeah, there Zaka Ashraf ने जाके players के against सारी scapegoating हम्म. कर दी in the middle of a World Cup tournament. Like who does that? जैसा भी captain हो, matches हार रहे हो, but you back your players even if they're Yeah. not winning, you back them. So that was another fact. And ऊपर से you decided इतनी जल्दी कोई tweet कर देता है, like बाबर ने design कर दिया, you tweet इतनी जल्दी captain आ गया आपके, like पहले से ही हो गया होगा ना ये सब कुछ था. So we aren't stupid. Don't make us think that we are stupid. You're looking stupid. So yeah, there were so many changes. Yeah. इतने सारे chairmans, and it's not still it. हफीज जिसके पास कोई कोचिंग का वो ही नहीं है, वो आके अभी बैठा हुआ है कोच कोचिंग करने. एंड वहाब रियाज, आई like वहाब रियाज का 50-50. I would say I don't know how he does, but yes, बहुत सारे factors हैं जो We all led to the what we are trying to do. that अच्छा. led to the हाँ यार, उस पर बाद में शो करेंगे. बट अली, तुम कुछ पॉइंट से डिसएग्री कर रहे थे, पहले उन पे टच डाउन कर दो. और लाइक जो बेसिक क्वेश्चन था कि अपार्ट फ्रॉम बाबर व्हाट अदर फैक्टर्स लेड टू हिज डाउनफॉल, प्लेयर की परफॉर्मेंस या व्हाटएवर. ओवर टू यू. जैसे मतलब अगेन मैं उन पॉइंट्स को अगर काउंटर करना शुरू करूं तो वो एक खासी लंबी डिबेट छिड़ जाएगी. सो सिर्फ इसी सेगमेंट पे रहते हुए आई थिंक जो आपने लीडरशिप ग्रुप बनाया था, दे डिडंट शो अप इनफ इन बिगर मोमेंट्स एज ए राइट. कलेक्टिव यूनिट. जो आपका लीडर ग्रुप आपने बनाया हुआ, शदाब है, रिजवान है, शाहीन अफरीदी है. बिगेस्ट एग्जांपल 2022 एमसीजी वर्सेस इंडिया लास्ट ओवर. एक तो आप मोहम्मद नवाज, चलो आप आपकी मिसकैलकुलेशन अगेन, डोंट वांट गो इनटू दैट. आखिरी ओवर में आप नवाज को ओवर दे रहे हो और आपका पूरा लीडरशिप ग्रुप इस बात पे इत्तेफाक कर जाता है कि मोहम्मद रिजवान विल स्टैंड सो मच बिहाइंड द स्टंप्स. और मोहम्मद नवाज, बिकॉज वी ऑल नो स्पिनर्स जहाँ पे कीपर्स के ग्लव्स होते हैं, उन्हीं को फ्लाइट ट्रेजेक्टरी उसी हिसाब से देता है. बिकॉज द कीपर वाज स्टैंडिंग सो मच बिहाइंड, नवाज ने बिल्कुल उसी तरीके से बॉलिंग कराई. एंड सो आपके लीडरशिप ग्रुप जो आपका था, उन्होंने जो आपके क्रंच मोमेंट्स है, दे डिडंट होल्ड देमसेल्व्स इन हाई ग्राउंड एट ऑल. और ये वर्ल्ड कप तो खास तौर पे आई थिंक शदाब लिटरली लुक्ड अ शैडो ऑफ हिमसेल्फ. Biggest reflection point for himself. I think he should be looking forward to play more domestic cricket, especially the longer format, because अगर उसने ODI में survive करना है, he has to play the longer format. He can't survive क्योंकि मैं 22 से लेके 4 ओवर करा के आ गया हूँ. एंड जब आपको टफ मोमेंट्स में 10 ओवर कराने पड़े मुंबई की हीट में, अभी तो शुक्र है मुंबई की हीट में खेले ही नहीं, तो टफर कंडीशन में जब आपको स्टेमिना चाहिए होता है, यू इवन कांट लैंड 3 or 4 good deliveries at right spots. So ये बहुत बड़ा फैक्टर था. पीसीबी के चेंजेस, अभी तो शुक्र करो रमीज राजा के एरा में ये डिबेट्स, क्रिकेटिंग डिबेट्स कि पिच ऐसी नहीं बनी, डोमेस्टिक ऐसे है, हाँ. वो जूनियर लीग शुरू करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी. अब तो ऐसी डिबेट शुरू हो चुकी हैं कि आपका पीसीबी का चेयरमैन शोएब जट के साथ बैठ के इंटरव्यू में बाबर आजम की चैट खुद लीक करने का कह रहा है कि ये मीडिया पे चला दो. आई मीन हु द हेल इज does that to one of your biggest brand right in the middle of the What a, World Cup campaign? No, not even a single, even a child wouldn't do this कि आप किसी की प्राइवेट चैट लीक कर दो कि भाई ये मीडिया पे चला देना रात को. सो आई थिंक पीसीबी रियली मैसिवली लेट डाउन. और आई थिंक थोड़ा बहुत आपने टच कर दिया कि हमारा शेड्यूल इतना टाइट होता है कि हमारे पास ओडीएस होते नहीं है. सो वी डिडंट हैड इनफ प्रैक्टिस ऑफ ओडीएस. सो आई थिंक ये सारे मिल मिला के, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर बाबर आजम के अलावा लीडरशिप ग्रुप रहा है. ये पीसीबी का सर्कस अगेन सारे कैप्टन के साथ चलते रहता है, तो इसमें फिर अगेन बाबर आजम भी रगड़ा खा गया, बहुत ज्यादा रगड़ा खा गया, ज्यादती हुई है. लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा है कि लीडरशिप ग्रुप डिडंट stand as a collective unit for good period of time in crunch moments.
जा अली, और जो आपने पिछले भी को स्पेशली जक़ात को रगड़ा लगाया, दैट वाज ये अल्फाज है जो मैंने मिस कर दिया, बट थैंक यू फॉर पुटिंग देम. Of course, viewers, please get involved in the chat. We have pretty much covered the positives and negatives. अभी हम ratings की तरफ जाने लगेंगे. But before that, quick fire, like 1 minute, you both can take. Uh, Ali as batter, do you think he has improved over the years, like अभी captaincy के अंदर, और आपको लगता है कि he can go up a notch or two in years moving forward? अहमद आई थिंक स्टैट्स हैं उसके कि कैप्टनसी के बाद उसके स्टैट्स इंप्रूव किए हैं बिफोर ही टुक द कैप्टनसी, लेकिन आई थिंक ही हैजंट डेवलप्ड हिज स्किल्स, और आई थिंक कुछ लिहाज से तो उसकी स्किल्स बहुत ही रिग्रेस कर चुके हैं, कम हो चुके हैं. मतलब कि लेग स्पिनर रहेगा जो आर सर्टेन दैट बाबर आजम विल गेट आउट विद इन 12 डिलीवरीज. जब भी लेग स्पिनर आएगा ही वॉन्ट हैव अ सिंगल क्लू. और एशियन बैट्समैन आपके पास स्वीप है ही नहीं सिरे से, सो आई थिंक दैट इज मेजर फ्लाई इन हिमसेल्फ. सो या आई थिंक बाबर आजम हैजंट डेवलप्ड हिज स्किल्स, और कुछ लिहाज से तो he, he has downgraded himself in batting. So again, hopefully for ourselves to carry us forward, Champions Trophy coming up. I am not much looking forward to T20. Champions Trophy at home conditions. Hopefully, we can get some sort of new talent in with the sorts of Haris sign. Hopefully, so I think with captaincy pressure released, he improves his batting skills. I think उसको massively अपने काम करने होंगे जो उसकी lacking चल रही है. Yeah, I really think so. He works on his skills. Okay, Hosanna, ratings का time आ गया. Final segment. Individual, like collectively rate करना है, test, ODI और T20 captaincy मिला के, like full era के rating. So yeah, what number you wanna put out against these numbers and why? Okay, I would say 6.5 because we saw some great moments. Okay, Indian defeated India for the first time. We saw some great moments, but we couldn't finish the we couldn't cross the line. That frustrated me because we had such a good set of players. Like you had the best pace attack. Like you choked Yes. big time. So I would say, yeah, so Mm, 6.5 from my side. Ali, what about you? Purely as a captain, I think 3/10, 3/10, yeah. Oh, damaging blow. And why? And very shocking why. As a captain, I'm a 3/10. I can't go higher than that. Sorry. Okay. Oh, fair enough. Fair enough. So, like, there is a huge contrast in between our panelists. जहाँ तक लाइव चैट में वोट्स की, that is going with 3.5 to 7. इसमें भी वैसे we would have been more, एक दो option और करके. People Seven watching bet us, ten please option किसने रखा है भला? 7 से 10 वाली range. बनता है bro. Wholesome Not vibes. even Babar FC can go to 10. Many Babar Azam FC can go as long as 12. But yeah, coming towards me, मेरे के लिए आखिरी टाइम है. But people watching us, please comment with your rating. क्या numbers दोगे आप Babar को out of 10 for his whole era of captaincy? Hussain has gone with 6.5. Ali has gone with 3. Average bun rate around about 5. Okay. I am going round about Hosanna's figures. That is 6.5. Okay, I take it. I would give 6, but I can take 6.5. Okay, viewers who have joined us now, because I put out in my opening statement, he made us dream for big things as well. Even in a way, I am still baffled कि उसी के कैप्टनसी के अंदर हमने भी पाकिस्तान में देखा. ठीक है, श्रीलंका की टीम थी, बट कंडीशंस वो थी. But you like sparked a totally new vision. हमने T20 फॉर्मेट, ओके, जो T20 2021 वाला वर्ल्ड कप था, बाबर की अपनी बैटिंग बहुत अच्छी रही. लाइक अनबीटन स्ट्रीक रही ऑस्ट्रेलिया तक. फिर ऑस्ट्रेलिया का जो T20 फाइनल हुआ, ओवरऑल अच्छा टूर्नामेंट नहीं था. ठीक है, हम एक टाइम पे हम कुदरत के निजाम पे आ चुके थे, बट स्टिल दैट इज व्हाट द टूर्नामेंट्स आर ऑल मेड अप ऑफ. एक एशिया कप का फाइनल पहुंचे, वो जाके चौक किया. सो इफ यू काउंट देम इन,
वी हैव बीन हियर, जो हमने कभी ड्रीम भी नहीं किया था। पिछले 2 वर्ल्ड कप स्पेशली कोई होप ही नहीं होती थी ना यार, कि वर्ल्ड कप से पहले कोई भी होप नहीं होते थे कि यार जस्ट वी आर जस्ट देयर टू पार्टिसिपेट, जस्ट देयर टू वाइब इट अप। ही मेड देम ड्रीम, सो ऑलरेडी मेरी रैंकिंग हाई रहेंगी। वी हैव बीन टू फाइनल, वी हैव बीन टू सेमीफाइनल। जो मेरी रैंकिंग सबसे लाइक डाउनग्रेड हुई वो टेस्ट का सीजन जो हमने फ्लॉप किया। और अगेन टैलेंट प्रोडक्शन, लाइक प्रोडक्शन तो नहीं यूज होगा, what should be the word? Talent procurement. That is the right word. These are the biggest negatives जिसकी वजह से वो that number था। और of course CWC में उसकी अपनी परफॉर्मेंस ठीक है, पीपल उसकी परफॉर्मेंस को रेट करें 40 की एवरेज, 86 का स्ट्राइक रेट, बट ओवरऑल उसकी इनिंग्स मुझे नेट नेगेटिव ही लगी हैं। सो फॉर ऑल Yes, दीज रीजन, Patrick. so okay, always going hard, hard and hard. So for all that reasons, I am going with six. I would give it a six. So six, 6.5, and three. That makes it into 15.5 out of 30. So make it 5 out of 10. Yes. Okay, Ali and Hosanna, thank you so much for joining. Viewers, hope you have liked. And please let us know your feedback, your thoughts on the Babar Azam era's captaincy. That show was totally down to Babar Azam era. बाकी डिबेट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि कौन सी चॉइसेस होनी चाहिए थी, जो बन गए उनका क्या होगा, बिकॉज फरवरी में दोबारा नई मैनेजमेंट आनी है, सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो मोहम्मद हफीज मोहम्मद हफीज डायरेक्टर बना है और फिर उसे खुद अपना इतना ज्यादा पसंद है कि उसने अपने आप को चीफ सेलेक्टर बना दिया। कमाल नहीं हो गया Without any qualification, coaching आज तक अंडर 19 की भी नहीं की एग्जैक्टली थी। I don't know how is दैट it इज नहीं यस यार, एंड दैट इज मेंशन्ड इन होल लॉन्ग पैराग्राफ के आपकी जे रिक्वायरमेंट्स होंगी पीसीबी के वेबसाइट पे। नहीं नहीं नेक्स्ट नहीं थिंग अपने आप को वुड बाकी बी कैप्टन बना देगा, अपने आप को एक वन एंड पॉइंट पाके कैप्टन बना देगा। नेक्स्ट फनी थिंग वुड बी कि वहाब रियाज अपनी रिटायरमेंट वापस ले ले, पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करे और खुद अपने आप को सिलेक्ट कर ले टी20 के स्क्वाड में। दैट वुड बी पीक क्लाउन यार। आई एम अप फॉर इट। हाँ, और हफीज भी देखो को एज अ कोच जा रहा है, हमें जरूरत पड़ सकती है, ऑस्ट्रेलिया में मार पड़ेगी हमें, तो ऊपर आके लेफ्टिस्ट के खिलाफ वैसे भी अच्छा रिकॉर्ड है, तो जो एज अ बॉलर वी कैन यूटिलाइज हिम, जैसे हमारे स्पिनर्स जा रहे हैं, सो या पॉजिटिव साइड बहुत है इसकी। सो बट वो डिस्कशन कभी बाद में होगी। Thank you, Ali. Thank you, Asana, for your inputs. Viewers on your way out of the stream, please make sure to hit the like button. Subscribe if you haven't done so already, and please spread the words that are ARD. On that one, myself, Ahmed, along with Ali and Sana, saying goodbye to all of you. Allah. Office.